कर दी. We can discuss now about the female reproductive system. Within the female reproductive system, we can discuss now about the internal genital organs. Internal genital organ within the female reproductive system should include of the uterus, fallopian tubes, vagina and ovaries. These four types of organs within the female reproductive system is the internal genital organs. These all organs should be located anteriorly in inner aspect and required special instrument for inspection and visualizations. Then first we should discuss about the vagina. Vagina is a internal reproductive organs and which is a fibromuscular organ. Fibromuscular organ just like a tube-like structure. Vagina is a fibromuscular organ, tube-like structure. Then the vagina extends from cervix of uterus to vaginal opening. That means this. ये जो कर्सर चल रहा है ये स्ट्रक्चर है आपकी वेजाइना की. ये यहाँ से सर्विक्स है और ये है यूट्रस और ये जो आपको कैनाल दिख रही है ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये आपकी वेजाइना. तो ये यूट्रस है, ये यूट्रस का पार्ट है सर्विक्स. तो वेजाइना जो है ये वेजाइनल ओपनिंग है. वेजाइनल ओपनिंग से लेके ये जो यूट्रस का जो सर्विक्स पार्ट है यहाँ तक एक्सटेंड होती है, फैली हुई होती है वेजाइना. देन वेजाइना आर एक्सटेंड फ्रॉम सर्विक्स ऑफ यूट्रस टू वेजाइनल ओपनिंग and allow menstrual flow and uterine secretion in outer world through vaginal opening. That means menstrual cycle के दौरान या फिर जो यूट्रस के अंदर जो भी यूट्राइन फ्लो है उसको अलाउ करती है बाहर निकालने के लिए एक्सटीरियर वर्ल्ड में किसके द्वारा? वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा. Then further make 45 degree angle from horizontal and running in upward and backward direction. That means horizontal. This is the horizontal. This structure is a vagina. Within the horizontal, this vagina should be make approximately 45 degree angle. This angle is the vaginal angle, 45 degree within the horizontal and running in upward. That means ऊपर की तरफ and backward, पीछे की तरफ. Vagina are running in upward and backward direction and make 45 degree angle within the horizontal, located between the rectum and urethral opening. This structure is the bladder. This is the urethral opening and this structure is the rectum. Rectum and urethral opening दोनों के बीच में पाई जाती है कौन सी स्ट्रक्चर? वेजाइना. Then further we can discuss that measurement of the vagina. Anterior length is the 7 centimeter and posterior length is the 9 centimeter. That means this structure is the vagina. This length is the anterior length is about 7 centimeter and this length is the posterior length. Posterior length is about 9 centimeter and diameter of vagina at the introitus. Introitus का मतलब है opening. Opening में vagina का diameter होता है 2.5 centimeter. That means narrow diameter. And running upward, जैसे जैसे upward direction में जाते हैं vagina का diameter बढ़ता जाता है और terminal portion पे होता है 5 centimeter. Vagina का diameter vaginal opening पे 2.5 centimeter and जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं डायमीटर ब्रॉड होता जाता है और मैक्सिमम डायमीटर कितना होता है? 5 सेंटीमीटर. देन फर्दर वी कैन डिस्कस दैट वेजाइनल फॉर्निक्स. Vaginal fornix, that means at the upper end vaginal residue or fold are present within the cervix. These are known as fornix. Four types of fornix are present within the vagina: anterior fornix, posterior fornix and two lateral fornix. Fornix का मतलब है ये आपकी वेजाइना है, ठीक है. यहाँ पे आपका यूट्रस है, ये यूट्रस का जो टर्मिनल पार्ट है ये है सर्विक्स. अब ये जो वेजाइना है जहाँ पे ये सर्विक्स के अंदर वेजाइना के कुछ फोल्ड पाए जाते हैं, रेडियो पाए जाते हैं. इन फोल्डों को क्या बोलते हैं? फॉर्निक्स बोलते हैं. वेजाइना के अंदर टोटल 4 फॉर्निक्स पाए जाते हैं: एंटीरियर फॉर्निक्स, पोस्टीरियर फॉर्निक्स और 2 लेटरल फॉर्निक्स. देन आफ्टर फर्दर वी कैन डिस्कस अबाउट द लेयर ऑफ वेजाइना. लेयर ऑफ वेजाइना, 4 टाइप्स ऑफ लेयर की बात करें within the vagina 4 types of layer are present. First one is the serosa layer, second one is the muscular layer, third one is the submucosa layer and fourth one is the mucosa layer.
First is the serosal layer. Serosal layer is the outer protective layer of vagina. सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है serosal layer, जिसका मेनली फंक्शन है वेजाइना का प्रोटेक्शन. The next one layer is the muscular layer. These muscular layers to be formed mainly by muscular structures. Inner muscles is the circular muscle. Inner muscles is circular direction, and outer muscle is longitudinal direction. That means वेजाना के अंदर जो मसल्स पाई जाती है, अंदर वाली मसल्स इस तरह से सर्कुलर डायरेक्शन में पाई जाती हैं, और बाहर वाली जो मसल्स हैं वो लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन, इस तरह के डायरेक्शंस में पाई जाती है मस्कुलर लेयर के अंदर. द थर्ड लेयर इज द सबम्यूकोजल लेयर. द सबम्यूकोजल लेयर आर मेनली फॉर्मेड बाय द एरियोलर connective tissue. Areolar connective tissue, and fourth one is the mucosal layer. These mucosal layer are mainly formed by the stratified transitional epithelium. Transitional epithelium tissue. So four types of layer are present within the vagina. Outer layer is the serosal layer, which are main function is the protection. Middle layer is the muscular layer, which to be present in inner in circular direction and outer in longitudinal direction. Then third one is the submucosal layer, which are formed by the areolar connective tissue, and fourth one is the mucosal layer formed by the stratified transitional epithelium tissues. Then further we can discuss about the vaginal secretion. Vaginal secretion. Vaginal secretion. The pH of vagina is 4 to 5, approximately 4.5. The pH of vagina is between 4 to 5, mainly 4.5, which is acidic pH. Acidic pH due to presence of Dodden's bacilli bacteria. Dodden's bacilli bacteria. These bacteria should be responsible for conversion of the glycogen to lactic acid. Vaginal secretion. The pH of vagina is between 4 to 5, mainly 4.5. This is a acidic pH. This acidic pH should be occurred due to presence of Dodden's bacilli bacteria. This bacteria convert of glycogen to the lactic acid. Due to lactic acid presence within the vagina, the pH of vagina is approximately 4.5, which is a acidic pH. Then further we can discuss about the blood supply within the vagina.